habits and behaviors, as an individual, because all this data, this analysis helps, the government and the organization to take better and relevant decision, going forward. Not only that, even we people also do the same thing, as an individual. But besides, beyond that, the next point is, the concern is whether we'll be able to protect our personal data from privacy, breaches, because these breaches, they can be described as ability to, obtain the personal information without knowing the owner of the data. It is common for an organization to ask personal data such as uh, name, gender, and phone when we interact, with the customer care, with the people, uh, in the process while we are subscribing to the services. But no one wants, in fact, including me also, to share the data or information with a stranger without knowing them. Now the question is, I mean, of course, you will agree finally that what to do to ensure that our data, stays safe. At the same time, the welfare of society's well-being also is taken care of by the organization, by the government. The answer is, of course, we'll agree in data empowerment. You know, I mean, I personally believe, going by the topic of this STTP, that this data empowerment refers to the process of controlling, the data for the benefit of the self, the society, the nation as a whole, right? I'm sure using this Excel, as one of the tool, SQL, I believe SQL is a structured, this query language. Earlier it was SQL, structured English query language, and then Python. It mentions SPSS and Power BI. I'm sure Power BI you know much better than anybody else's, because Dr. Ankit has just completed one, you know, workshop on Power BI. So all these tools, they will help you understand better as to how to, protect data, how to, analyze data, how to keep data, how to take better decision using Excel, SQL. In fact, you will be surprised, Excel is quite outdated and quite old. I mean, they often say, but to me it appears that whatever understanding we have about Excel, I believe that I'm expert of Excel, but still when I compare myself with others, I find that the whole understanding of mine is just a drop in the ocean of Excel. So it is like crystal ocean. I mean, more you work with Excel, I mean, mm, the more you come to know about it. It is just growing, features are growing, new things are coming there, and learning all of it is a Herculean task every now and then. So I believe 10 years later also Excel will stay as important, as relevant as it is today, or it has been 10, 20 years ago as well. Right. So I'll not take much of your time. Thank you so much for asking me to address you people. I'm sure that at the end of this particular HTTP this program, everybody will end up with what you call more empowerment on data using all of these tools. Thank you so much once again. Thank you so much, sir, for all this motivating. Thank you so much, sir, for always motivating and encouraging us to do more and learn more. Now, before continuing with this session, I would like to introduce our first resource person of the day, CA Nita Sahu. Ms. Nita Sahu, a chartered accountant by profession, currently holds the position of assistant professor at the Ajay Kumar Garg Institute of Management. With over 6 years of experience in the industry and a remarkable 15 years of experience in the academics, she has not only served in senior administrative roles but has also offered her consultancy services to various esteemed organizations such as Jindal Group and BCS. As a fellow member of the ICAI, her areas of expertise encompass taxation, corporate finance, financial analysis, among others. Now I would like to invite CA Nita Sahu to kindly take the session forward about the introduction of STTP program.
Please, ma'am. Thank you, Sakhi. Am I audible, Ritesh sir? My voice is okay? इको हो रहा है क्या अभी भी? And I'm sharing something. My PPTs. PPT is not visible. Yeah. Now PPT is visible, ma'am. Okay. Thank you, Ankit sir. So thank you, Director sir, for your motivational words. And thank you all. Once again, I welcome you all in the formal session of this short-term training program. I will be introducing the program, right, that what we are going to do in next 5 days. Because this program is based on data, and director sir rightly said that data is so much data is there. So again, I'm saying something in the same note that this slide, you can say that how much data we are generating in 60 seconds, right? So huge data is generated by each and everybody. That means cumulative effect is huge. Obviously, we are thinking that we are posting a single post or uploading a 2-minute video, but cumulative figure is huge, and impact is likely that data is so much data, big data is here, so much data is generated by everybody, right? So you can see here. Now, this shows that who is the leader in generating data. And this basically, this slide is based on the report of different companies. And companies are saying that the banking industry is the leader in the data generation. That means 65% of the respondents are saying that banking industry is generating huge data. Obviously, financial data is there, transactions are there. So it is but obvious that the banking sector is generating huge data. So data is generated by one industry is useful for other, and you know that these companies, there are certain companies which are selling these data. We are buying. There are companies are buying data, and that data will be converted into information. So insurance sector, telecom sector, retail and industry and manufacturing. That means almost every industry is generating data, and banking sector, insurance sector are the leaders. So because our program is on the data empowerment, so data empowerment is basically using this raw data and make the useful information, that converting the raw data into useful information by using different types of tools, different techniques, by providing training to the employees. Obviously, once the employees are trained, then they will be converting this data into useful information. Just hold on. रितेश सर, रितेश सर। जी मैम बताइए। सर स्लाइड्स आ रही है ना? स्लाइड्स विजिबल है? हाँ विजिबल है। ओके। So again, I'm saying the data empowerment means converting the raw data, big data into useful information. And without that, that means everybody needs the individual basis, on the company basis, corporates are using that. But that data is useful only when it is analyzed. It is converted into report.
Otherwise, it is useless for the companies. So how the data is converted? Here I have a flow chart which will show that how data is converted. So raw data is there, companies are buying, free data is available, there are so many things. And after that collection of raw data, the data will be pre-processed, it will be cleaned and structured. In the coming session, Dr. Ritesh will tell you that how we can clean the data, how we can structure the data by using Excel. And after cleaning and structuring of the data, the different techniques, different softwares can be used for the data analysis. That is the skill which is required. And that is, even I must say that this is the biggest job profile which is available in the market. And it will opening huge opportunities. Obviously, it is a highly paying job, right? So data analyst job is very good, very highly paying, and even lots of skill is required. So, and after that analysis, what will be your output? That can be insights. That Ma'am, can be, please change the slide. yes, ma'am. Like we cannot see the slide to which you are talking about. Like if you can change the slide, it will help us. Thank you. Now is it? Yeah, it's there. Okay. Okay. So it may be some problem in the Neeta ma'am, slideshow. ma'am kindly put it on slideshow. हाँ, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी तो. Is it okay? Yes, it's there now. It is okay, Right. but it would be great if you put it on. Once I started slideshow, then there may be some problem. I'm trying it again. Now, is it visible, Vidhi ma'am? Yes, ma'am. The slide is there. And if you are comfortable with this, let's go with this. Okay. No issues. So what I'm saying that data is analyzed and reports are there. These analyzed data can be converted into models even. Nowadays, you might be listening that there are algorithms, right? In a stock exchange, algorithm-based trading is there. So this data will be converted into algorithm and it will become a product. That means there are fintech companies which are selling these algorithms to these investors, and this is very helpful for the investment, even for the trading, right? So this data is helpful for the decision making. This data can be converted into a product, data-driven product, right? Models can be created, algorithm is there. So there are lots of opportunities that how can we use the data for our business purposes. Now you can see here that how data is used. The demand of big data is growing, demand of analytics is growing, as well as the analyst is growing. That means this skill is widely required. And you can take an example that the data can be used for financial operations like transforming business performance. That can be used for financial and operational performance. It can be used for the calculation of the risk. You know that risk is everywhere. Financial risk, operational risk, combined risk, even marketing risk, product risk, so many risks. Some risks are systematic, some are not systematic. So lots of risk is there. And every company wants to minimize, wants to mitigate that risk. And data analytics will be very helpful for mitigation of this risk, can be used. So these are few examples, and there are so many examples are there. The utilization of big data, of analytics is growing very fast. Now you can see that what type of skills are required. There are few software skills which are required as an analyst, and there are few technical or hard skills are required. Software skills like critical thinking, like communication skills, like collaboration, teamwork, all these things are required. And hard skills like you must know your programming languages like SQL, Python. You must know about some softwares which are available in the markets. Data visualization softwares are there. So these are few skills, and in this STTP program, we will be trying to develop these skills. Obviously, these skills it will take time. Within 2 hours, it will be very difficult, but it needs practice, right? So we will try to prepare a foundation, a base for that, so that you can inculcate that practice. And after practicing, a lot of time is required, but after regular practicing, you can be an expert. Now see, this slide will show you, this is again based on some research done by the different companies. Research says that the big data, that means
your analytics data is required for better decision making. That means companies are saying, 49% companies are saying, yes, analytics is required, big data is required for better decision making. It can be helpful. Similarly, 16% are saying for better strategy making or their implementation, customer relationship, better financial performance. But in case of, if you are taking an example of fintech company, this percentage will be high. Fintech company is using that data for their own decision making, better decision making. But for the normal company, financial decisions can be taken on the basis of these big data. So now what we are going to do in coming 5 days, this program is designed to develop or basically to create a foundation for the beginners. Majority of our audience are student. So we pick the topics so that student can easily understand, and they have, and they can generate an interest basically, right? So this is the snapshot how we are moving for all the 5 days. After this introduction, first session will be on the Excel essentials. Dr. Ritesh Singhal will be taking that session, and these topics like VLOOKUP, HLOOKUP, goal seek, scenario, these are very useful for the financial decision making as well as marketing and HR and different other decision makings. So Excel can be used. And next day, that means day 2, it is dedicated to Python. Python language will be taught by Dr. Shashank Sahu. He is professor in AKGC. And day 3, SQL is taken by Dr. Shashank Sahu. Day 4 is dedicated for SPSS, that is software. And Mr. Gautam Jaiswal will be there as a resource person for day 4. And day 5 is dedicated for Power BI, that is for data visualization. And Dr. Ankit will be taking that session. He will be our resource person. So I'm just taking few more minutes to tell you that how Excel and other Python, SQL and other softwares are useful in business decision making. For example, I'm taking this one, that Excel is useful. Excel can be used everywhere, can be for data storage, can be used for the, you can say, filter of the data or preparation of the report, or for example, that can be used for the accounting even. You can prepare your balance sheet, your PL account by using Excel sheet. You can connect different sheets. You can prepare trial balance by using Excel and connect your trial balance sheet with the PL and balance sheet. So you can prepare mini model type things, and financial reports can be generated by using this Excel. For example, if you want to take decision for acquisition of asset and all, there are several formulas which will save you time. Like if you are doing IRR, that is internal rate of return, you want to calculate for acquisition of any asset. So for that purpose, if you are doing it manual, it will take a lot of time and possibility of error will be there, obviously. But if it is, if you are doing this, that means applying IRR on some project, by using Excel, it will take few minutes. You can apply formula and your results will be accurate as well. So Excel, these are examples. There are few examples. The use of Excel is used wide, right? Next day, while picking Python, obviously for MBA student, you are thinking Python is a language, and you thought that coding is required and coding is a little bit hard, and there are certain baggage in our mind. But Python language is very easy to learn. Obviously, coding is there, but their codes are very normal. बहुत high tech. It's not required very high level of technical skill. Python is very easy to learn. So Python language can be used by almost every industry is using it. Here I have few examples, that insurance industry, banking, aerospace, finance, they are all using Python for their database management, for their calculations, for their decision making, for data analysis. Day 3 will be dedicated to SQL, that is structured query language. Again, it is a language, so fear is there that coding is required, but it is very easy language to learn. बहुत बड़े आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं होगी. Very simple keywords, that is create, select, drop, this type of keywords are there, and it will be very easy to learn. Hardcore coding is not required. It is much faster. It can manage large database. So when you compare your SQL with Excel,
You can process your data with the help of Excel, but SQL will be helpful, very helpful for large database. For small database, Excel is okay. For database management system is required, large database is there, then SQL will be very helpful. SQL uses multiple tables. It will give you multi-dimensional field and lots of tables and other, you can say, presentation of data can be done by using SQL. So here I have example that how SQL can be used. You can see, like if you want for the marketing person how SQL can be used. Just an example that if you are a marketing guy and you want to know the purchasing tendencies, like behavior analysis you want to do for online store customer, so then SQL can be done. Data, obviously purchasing data, customer data will be large, and you can apply that query, SQL query, and you can reach on the decision. That means very quick results will be there, and based on the information you can decide that whether you need additional promotional campaign, advertisement is required or not, marketing kis tarah se karni hai. This can be done by using your SQL. Similarly, one more thing, like if you want to decide that which is the profitable location for a store chain, right? Different warehouses there, different stores are there, and you want to decide that which is the most profitable location. With the help of SQL, obviously you can do that. It will analyze your data, it will quickly pick the data from the database, and on the basis of that, your stocks can be decided, inventory can be decided, your HR team can decide that how many employees are required to depute there. So these are few examples, and obviously the detailed analysis, detailed the insights are given by the resource person. Next session will be on SPSS. SPSS is a software. Basically, this software is used for social sciences, but now this software is very popular for the research. Corporates are doing their research. Just for example, you want to suppose launch a product, and for that you conduct as a survey. So how to analyze the result of the survey? So the solution is SPSS. For the researcher, for the analysis of their questionnaire, the SPSS will give proper, you can say, precise and accurate results. Stats techniques can be applied, and SPSS will be very helpful for the companies as well as research. The last session will be on Power BI. Power BI is basically used for data visualization. It will be a fun, like when you learn this Power BI, it will be a fun for you. You'll be happy to see the results. You'll happy to see the dashboards you are creating, right? It is very easy to learn, very accurate. You can say real-time information will be processed, and the database which is required for the preparation of a dashboard or preparation of the report can be Excel, can be PDF, can be web page. That means it can be used on any input source. कहीं से भी फाइल लेकर आप पावर बीआई यूज कर सकते हैं. So it will be used for the report generation. It will be very interactive. Your reports, your dashboard will be very lively. You'll enjoy that. And Power BI session will be taken by Dr. Ankit. So I hope that you'll enjoy the content, you'll enjoy the learning. We have very qualified, very, you can say, highly qualified, highly, that resource person are very nice, and you'll enjoy that learning. Thank you and happy learning. Thank you so much, ma'am, for such an informative session and providing students with the insight about data empowerment. This would really help students have a better understanding of the upcoming sessions. Now I would like to introduce our second resource person of the day, Dr. Ritesh Kumar Singhal. Dr. Ritesh Kumar Singhal served as a professor specializing in decision science, operations, and information technology at Ajay Kumar Garg Institute of Management. With over 2 decades of expertise in teaching and research, he has contributed to numerous national and international journals and conferences too. Dr. Singhal possesses several patents both from Australia and India and has authored 5 acclaimed books.
such as Statistics for Management and Business Competitiveness in the 21st Century, published as a part of Macmillan Advanced Research Series. He has also visited Geneva and Zurich University for academic occasions. His academic qualifications include a PhD and an MBA from Jamia Millia Islamia, as well as an MSc in mathematics and a postgraduate degree in information technology. Now I would like to invite Sir for continuing with the session. Sir, please. Thank you, Sakib, for such a nice introduction. Although, uh, so in this session, I'm going to start as per the schedule. Let me share my screen first. Okay. Is my screen visible? Yes, sir. Thank you. So, welcome to the participants in the day one of this STTP short-term training program. And today's session is on MS Excel. And this is a 5-day FDP as earlier, as Neeta ma'am already explained you. This is a 5-day FDP and today's session, and this session is on MS Excel. MS Excel is actually a very easily available, user-friendly software which is accessible to everyone. And to begin with such a simple or such a easily available software, it is always better to start with. So that is why we keep this session on day one. And before going further, we must see how this Excel journey starts from 1985 till date. We have seen several versions of MS Excel, and before this, we also have a software like Lotus 123, Office Calc, and there are various other softwares or various other products given by or produced by several other organizations. But after the advent of this particular Microsoft Excel, this becomes so much popular as it is very much user-friendly and it is compatible with the existing operating system like Windows. So you can see this particular logo. This is the first logo, and time and again the logo become changed, and each of the version become advanced and updated from the previous version. Every time, so this means that Microsoft works on this MS Excel to upgrade it, to update it time and again as per the requirement of data, as per the requirement of people, changes time and again. Earlier today, in this today's session, the beginning, Director Sir says that after 10 years, Excel still become relevant. You can see, starting from this journey 1985, still it is relevant. So after 10 years from now, that is 2033 or 2030, still Excel become relevant because it will change their software, it will change their this particular interface with the changing technologies. Because you may have understood or you may have seen somewhere that Excel also include ChatGPT or AI tools to generate their queries as an add-ins in the newer versions. So they keep on updating themselves, and still people from 1985 till particular this date, they can say, or they must say, like Excel would be relevant in after 10 or 30 years in a row, because it is being updated time and again. So that is why I'm
I'm sharing with you that Excel would not be outdated anytime. Outdated will not be there in the future. So you must learn Excel because when students pass out from here, they say that we have learned different papers, different subjects, different lab theory, and different projects. But ultimately, they are working on MS Excel in their real-time jobs. So that is why it is relevant to understand Excel today for students as well as for researchers as well as for faculty members, those who are those who are participated in this particular program. So today's content is basically uh, flowed like this. First of all, we understand the basics of Excel, where we understand interface, different kinds of functions, entering data validation, entering data into Excel with some validation rules, data cleaning techniques. We'll understand this particular data cleaning through Excel also, through Excel itself. And then after that, data analysis, in which we understand lookup, although there are few, there are VLOOKUP, this HLOOKUP, and in newer version there are XLOOKUP also. Pivot table, we'll discuss what if analysis, and in what if analysis, we'll discuss goal seek first, and after that, scenario manager. Scenario manager. Okay, so we'll discuss these things, and finally, at the end of the session, we'll be uh, having a look, an outlook about data visualization, how the data tells tells his own story in terms of pictures, in terms of visualized graphs. So we are going to start with here. Uh, First of all, this is a basic terminology about Excel. It's a spreadsheet program. It is usually called spreadsheet. Spreadsheet program. It is a part of Office family of business software, and it is being produced by Microsoft. It used to organize data, it used to store data, it used to edit data, and analyze the data after that. This is the first page of Excel. When you open Excel in your sheet, in your workbook, this is the very first page. You can see here there are different kind of ribbons are there. Home, insert, page layout, formula, data review, view, and developer. And in this particular sheet, you can see there are grid lines, and each grid line, and when two grid lines intersect each other, or you can say rows and columns intersect each other, they form a particular cell. And every cell is having a unique address. Every cell is having a unique address. Unique address. Like the address is D15, where D represents column and 15 represents row. So every cell is having a unique address. First start with alphabet. Alphabet represents column, and a number after that represents rows. So every cell is having a unique address. That is why sometimes we usually call not the value, we usually call the address of that particular value. And there are few more things like title bar is there. Formula bar is very important, where you usually write formulas. Spreadsheet navigation on the left hand bottom side. Worksheets, there are different worksheets, we can add it. By default, 3 worksheets would be open when you click first time Excel. Sheet 1, sheet 2, sheet 3, and after that you can add multiple sheets into it. And below this, there are status bar. Status bar shows the processor availability. Status bar shows how you zoom the sheets. Status bar also includes page views, web layout, or any other layouts. Scroll bars is there, and quick access toolbar. Quick access toolbar, we can modify it.
generally, if we have some uh, techniques or tools and techniques we frequently used, then we add it into quick access toolbar so that we should not search into different kind of ribbons, different kind of menus. Okay, so this is the first interface when you interact with Excel, when you uh, interface with Excel, this particular sheet you may have seen. There are few important things like Excel files is usually saved with the important extension .xlx or in fewer versions xlxx. So it is useful for not only big companies, smaller companies also, and it is a very important data processing application. Okay, this is already being covered. There are few formulas and functions available in MS Excel, and these are very important formulas. They used to calculate the particular information, particular value in a data set. So functions and formulas are available in Excel. Excel usually start with equals to sign in the formula bar. So if I show you the categories of functions available in MS Excel, yes, there are different categories. There are first of all famous categories, famous and frequently used functions, financial functions. Financial function is used to calculate, as Neeta ma'am said earlier, they used to calculate NPV, IRR, PMT, IPMT, IMT. All these financial functions can be found in this particular category, financial functions. Logical functions, functions like and, or, not, where we combine two or more queries. So logical functions are there. Then text function. Text function is usually helps us to make some word in capital form, in small capital letters, in small letter, in proper letter, and length of the text. There are many other functions available in text function. Date and time function, where we usually write the information like date of joining, uh, date of retiring, time functions, today's date, future date, trust date, difference of two dates. Then we have lookup function. Lookup function is usually identify some values from the reference table. Then mathematical and trigonometrical functions are there. All mathematical functions are grouped into particular this category. Statistical functions are there. Statistical functions like average, maximum, minimum, then median, mode. All the statistical functions are being covered in this particular category of functions. So these functions are there. Now I'm going to take you the first. Okay, we start with this particular sheet. Yes, this one, the content. First of all, we are going to start with entering data. Entering data into Excel sheet. And while entering into data, we will use functions also. So we can understand 1 and 2, point number 1, point number 2 jointly. So let us see here. If participants allow me, can I share this particular Excel sheets with you so that you can practice it with me? Anyone? Do you want these sheets to work with me? Yes, sir. Okay. I'll share in with you on your particular uh, WhatsApp group. I think all of you are available. All of you are joined particular this particular WhatsApp group. So I'm going to share with you. Just a minute, I'm going to share with you so that you can work with me.
Yes, can I date? it is already shared. It is now shared. Please check. It is shared. Can we please check this? Yes, sir. It is available on that WhatsApp group. Okay. So please open first the sheet number 2, that is data validation. Please open the first one, first Excel sheet, that is data validation. Yes. See, in data validation tab, you can see data validation tab is available within data, and there is a data validation here. You can correlate it with my actions. Data tab, and within data tab there is a option called data validation. Data validation. Click on data validation. Data validation allows you to enter a value which is defined, which is specified by the administrator or uh, by the person who generate this particular Excel sheet. So you, because sometimes user enter values in their own format. For example, if I write apparel, someone like clothes, someone type like cosmetics को short में लिख देंगे, या food को food and beverages लिख सकते हैं. So you need to specify what kind of data user is about to fill. So you should particularly define this thing initially. So there is a sheet. There are 2 sheets. So I'm going first on sheet 2. Sheet 2 is having certain a table, a blank table, showing number 1 serial name, product category, code, price, GST, and total price. Okay. So, like first of all, I'm taking some arbitrary product, like मैंने लिखा shirt. Okay. Shirt product category किसमें आएगा ये shirt? Apparels में obviously. Apparels में. तो अब मैं सपोज करिए इसको अप्रैल लिखता हूँ, तो कोई हो सकता है स्पेलिंग गलत लिख दे, 3P लगा दे, कोई AREL कर दे, कोई कुछ और टाइप कर दे. So if different users type in different format, somebody is writing it into capital letters, somebody writes in the smaller letter, or maybe in different spellings. So if there is so, this will not a good sheet, because it will not efficiently search our data into this product category. So in this particular situation, what we do, we define some validation rule earlier before entering the data into a user sheet. तो क्या करना है उसके लिए? First of all, click data validation, and there is a option called list. There is an option called list. Take this option, and there is below there is an option called source. So within source, when you click on source and the cursor is blinking here, while blinking it, select this particular column. Select this particular range rather, from J3 to J8, and click OK. So let me tell you again. First of all, select this category where you want to apply this validation rule. Click on data validation, allow, list, source, this particular range, and click on OK. So whenever you click on OK, and now these particular selected cells is being available with this particular data validation text. Like if there is a drop down menu, see the drop down menu appears here.
Click on drop down menu, select apparel, and take the product code also. Okay. Similarly, we can do it here also. List, source, and take the product code APR, suppose price. For example, if I want to apply a particular data validation rule in this selected text from F4 to F8, from F4 to F8, and the rule is price should not more than 1000. Price should not more than 1000. So how I can apply this particular rule in here? Select data validation, allow whole number between 1 rupees to 1000. 1 rupees to 1000. So in these selected cells, I'm going to apply a data validation rule where I want a whole number between 1 to 1000 and click OK. So if somebody writes 6 here, it will accept. If somebody write 1003, it will show some error into it. ओके, तो ये शीट कहाँ यूजफुल होगी? जब कभी आपको यूजर से कोई डेटा लेना है और वो डेटा आपकी शर्तों पे हो, आपकी कंडीशन पर हो कि बिटवीन दिस एंड दिस यू कैन राइट अ डेटा. फॉर एग्जांपल एज, if employee age, so anybody should write it like from 18 to 60. Below 18 and after 60, one should not be an valid employee. So age can be covered in this category. Price or anything you won't have validation with numbers, you can apply it here. So it will correct the value, then only it will accept. You should give some valid data into it, then only it can accept. Suppose I am going to apply a GST here, GST, which is 14% in this case, because shirt is an apparel category, APR code, price 960, and GST, according to this particular reference list, GST is 14%. Now, again, I can write like allow list, source, and this particular thing. Okay. So one should select 14%. Clear? Now total price 960 plus 960 into this, and total price is 1094.4. Price plus GST. I think it is understood to you. Please, anyone reply? Anyone reply? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Okay. So price and GST is there, and total price comes out to be 1094. कोई ये भी पूछ सकता है कि सर ये हर बार ना, जैसे सपोज करिए कि मैंने अपैरल कैटेगरी सेलेक्ट किया और यहाँ पर जीएसटी को मैंने गलती से 4% ले लिया, तो वो तो ले रहा है, लेकिन 4% होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज अपैरल कैटेगरी का जीएसटी 14% है फॉर एग्जांपल. एक्चुअल मुझे नहीं मालूम, तो 14% ही लेना चाहिए. तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, आपके पास शीट है, यू शुड ट्राई इट. देखिए मैंने क्लियर ऑल कर दिया, वो सारे ऑप्शन हटा दिए. तो यहाँ पर एक ऑप्शन हम लगा सकते हैं, दैट इज, ध्यान से देखिए जरा, इक्वल्स टू वी लुकअप. वी लुकअप, वी लुकअप कैसे? वी लुकअप देखिए कैटेगरी कर, क्योंकि कैटेगरी वाइज जीएसटी है, प्रोडक्ट के नेम पर जीएसटी नहीं है.
GST is imposed on category wise. शर्ट की जगह अगर ट्राउजर होता तो भी इतना ही होता. तो apparel कैटेगरी को देखेगा, comma, take this particular table, select this particular table, comma, write 2. Why it is 2 here? Because your desired information is available in this second column, and click here. So automatically it will 0.14. Suppose आप यहाँ search करिए food. As soon as I click on food, यहाँ पर GST कितना आ जाना चाहिए? 4%. 4%. So click on food, you can see GST automatically change. देखिए एक बार और मैंने शीट को थोड़ा बड़ा किया. If you select personal care, GST 18%. If you select sanitation, GST 1%. तो इस तरह से 10%. इस तरह से you can use data validation with VLOOKUP also. So this is how we can apply data validation text, data validation rules in a particular sheet. तो क्या सीखा हमने? In data validation, there are different options we can apply. Like we can allow any value, we can allow whole number, we can allow decimals, we can allow list where source are given, we can allow date, time, custom text length, and custom also. You can write your own laws. And you can manage or you can control the error also in case. जैसे कि, for example, if I apply some data validation rule on price, that price should not more than 1000. तो अगर ये कोई एरर भी करे इसमें तो उसको क्या मैसेज फ्लैश हो? मैसेज फ्लैश होगा, मैं आज का ही लिख देता हूँ, STTP एरर एंड कस्टमाइज मैसेज लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि मैसेज वो आ रहा है जो मैंने दिया है. एंड क्लिक ऑन ओके. एंड देखिए जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको क्या दिख रहा है? STTP एरर, प्लीज गो बैक. Similarly, you can apply data validation error alert. इसको इधर डाल देते हैं. Error alert ये input message ये. Okay. अब जैसे for example I am making some mistake and writing information like this. तो क्या लिखा है? STTP error, please go back. This is the error which is the customized error. This is the customized error which I just apply here. And whenever any violation in data validation, the user will flash an error on the screen like STTP error and please go back. So you can customize your error. You can write whatever. You can write the error you can suggest the user that you should write the information below 1000 only. So this information can be suggestive, can be alert, can be error message also. So this is how we can enter into the data. तो डेटा वैलिडेशन रूल हमेशा एक बात ध्यान रखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज़ को कि डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया जाता है डेटा एंटर करने से पहले. क्या लगता है, डेटा एंटर करने से पहले होता है बाद में होता है? डेटा वैलिडेशन रूल हमेशा डेटा शीट तैयार करने के बाद और डेटा एंटर करने से पहले लग जाना चाहिए ताकि यूजर कोई भी एरर अगर करता है तो वो एरर स्टार्टिंग में ही करेक्ट हो जाए. अगर वो करेक्ट नहीं होगी तो लेटर स्टेजेस पर शीट तैयार नहीं होगी, लेटर स्टेजेस पर एरर्स होंगे और वो एरर मल्टीप्लाई होकर फाइनली जो डेटा एनालिसिस के रिजल्ट्स होंगे दैट वुड बी इनएक्यूरेट, दैट वुड बी नॉट अ गुड सिग्नल ऑफ योर डेटा एनालिसिस. So data validation is the first step to control the error. Data validation is the first step to make an in-text sheet where you can ask the users to write a data
which you want to create according to the rules created by. Okay, so this is my first sheet, data validation. Now I am going to close it. Although there is a number of options, number of tasks written here, you can complete this sheet later on. I'm going to close it. Next sheet which I am going to take here, that is data cleaning start. डेटा क्लीनिंग, आपको याद हो हम शीट पर हैं अभी, हमने एक्सेल के बेसिक्स देखे, इंटरफेस देखा, फंक्शंस पे बात की और वैलिडेशन रूल पे बात की. तो डेटा वैलिडेशन के रूल्स कैसे लगाए जाए. नाउ द थर्ड स्टेप इज डेटा क्लीनिंग. फिर भी आफ्टर एनी after making so much, after taking so much measures, so much precautions while entering the data, making some rules, data validation rules, making some giving some specification, after all उसके बाद भी एरर होने के चांसेस हमेशा होते हैं. ठीक है, तो एरर आने के बाद या यूजर के सही से ना समझने के बाद भी अगर कुछ एरर या कोई इनअप्रोप्रिएट डेटा अगर मिल जाए तो उसको क्लीन कैसे किया जाता है. दिस इज द नेक्स्ट स्टेप. सो रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू क्लिक दिस पर्टिकुलर sheet 3, that is data cleaning start, raw sheet. Is this available? Is this clearly visible to all of you? Yes, sir. Thank you, Himanshu. Thank you for your prompt reply. Welcome, sir. Okay, so this is the sheet which is already shared with you. Data cleaning इसका नाम है. अच्छा, इस शीट में आपको देखकर क्या लग रहा है? कोई कुछ बताए, कुछ शेयर करे. सर हैपेजार्ड सा डाटा लग रहा है. यस. हाँ, हिमांशु के अलावा कोई और बता सकता है क्या क्या चीजें इसमें दिक्कत आ रही है? ओके, तो इस पर्टिकुलर शीट में आप देखिए कि डेटा एंटर करते वक्त, बिकॉज यू आर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, structured sources, unstructured sources, from Facebook, from WhatsApp, from different other social media, you are gathered data from different sources. और वो डेटा सोर्सेज अलग अलग प्रोडक्ट के भी हैं, कुछ मेटा का है, कुछ गूगल का है, कुछ कहीं का है. तो सब लोग अपने अपने तरह से डेटा को मैनेज करते हैं. एंड जब वो डेटा आपके पास आता है तो वो कुछ इस तरह से दिखता है, गड़बड़ सा. कहीं कुछ हैश दिख रहा है, कहीं कैपिटल है, कहीं स्मॉल है, कहीं मिक्स है, कहीं डिपार्टमेंट के साथ सिटी का नाम भी ऐड कर दिया गया. लाइक फर्स्ट देखिए ई में क्लाउड टेक अंडरस्कोर टेक्सास, क्लाउड टेक डिपार्टमेंट है और टेक्सास जो है वो सिटी का नाम हो गया या उस पर्टिकुलर रीजन का नाम हो गया. तो सब चीजें मिक्स हो रखी हैं और मेरे को ये शीट कुछ इस तरह से बनानी है जैसे कि ये फाइनल शीट में आपको दिख रही है, लाइक दिस, जो कि ऐसे लगे किसी प्रोफेशनल ने तैयार किया. ठीक है, सो दिस इज द टास्क ऑफ कॉल्ड डेटा क्लीनिंग. डेटा को चेंज नहीं करना है, डेटा को डिलीट भी नहीं करना है, डेटा को मॉडिफाई भी नहीं करना है, सिर्फ डेटा को प्रॉपरली अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, सो दैट यू कैन मेक सम रिपोर्ट, मीनिंगफुल रिपोर्ट, यू कैन डू सम मीनिंगफुल एनालिसिस इनटू आउट ऑफ इट, एंड इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि डेटा को अपनी कहानी खुद कहने देनी चाहिए. एक बड़ी फेमस कोट है, एक बड़ा फेमस वर्ड हम पढ़ते हैं, डेटा, एक वर्ड लिखूंगा, कोई इसको पढ़ के बताएगा? मैं ये देखना चाहता हूँ कितने लोग जाग रहे हैं. डेटा स्टोरी टेलिंग. डेटा स्टोरी टेलिंग. सर डेटा स्टोरी टेलिंग. बिल्कुल शरद, आपने भी सही बताया. तुलसी? डेटा स्टोरी टेलिंग. बहुत बढ़िया. डेटा स्टोरी टेलिंग का मतलब है डेटा ऐसा हो वो अपनी कहानी खुद कहे, वो अपनी स्टोरी खुद बताता हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, विजुअल हो. आपने ग्राफ दिखाया, किसी को भेजा, तुरंत वो समझ जाए इस ग्राफ का मतलब क्या है. आपको साथ में एडिशनली कुछ वॉइस टेक्स्ट या टेक्स्ट मैसेज ना लिखना पड़े, डेटा अपनी कहानी खुद कह रहा हो. तो स्टोरी टेलिंग वाला जो फंडा है, इसका मतलब यह है कि डेटा को आपको
एक क्लीन फॉर्मेट में तैयार करना है, यानी आई वांट टू कन्वर्ट दिस रॉ शीट इनटू फाइनल शीट। तो वो देखिए हमें कैसे करना है। टेक योर माउस एंड कीबोर्ड विद यू एंड डू विद मी if you are available. So first of all, we'll remove these hash. तो हैश ज़्यादातर एक्सेल में कब आते हैं, जब कॉलम विड्थ और रो विड्थ सेट ना हो। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले क्लिक एनीवेयर ऑन द टेबल एंड सेलेक्ट एंड क्लिक कंट्रोल ए, माउस के साथ कंट्रोल ए। when you hit control A, this particular table automatically select, and यहाँ पर एक ऑप्शन है फॉर्मेट में दो ऑप्शन है, ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट दिस टेबल, क्लिक ऑन ऑटो फिट रो हाइट, क्लिक ऑन ऑटो फिट कॉलम विड्थ। देखिए कितना अच्छे से ये हैशेस हट गए। आपको कुछ नहीं करना, कहीं भी हो वो अपने आप से हट जाएंगे। क्लियर? ठीक है। तो फर्स्ट we clear all the hashes, that is because of incorrect row height, incorrect column width। उसके बाद एक इसमें कुछ गार्बेज जैसा दिख रहा है, ये सी द क्लाइंट नेम हेयर, क्लाइंट के नीचे देखिए amazon.com .inc, उसके ब्रैकेट में XNAX MZN पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो जो ब्रैकेट के अंदर ये जो वैल्यूज हैं, I want to remove those values because these are like codes। जहाँ से लिया उसके कोड होंगे, हमें नहीं चाहिए। We only want to have amazon.com। सर आपकी आवाज कट गई, ब्रेक हो गई। हेलो अभी आ रही है? यस सर, अब आ रही है। यस सर, थैंक यू। तो क्लाइंट नेम में मुझे चाहिए amazon.com, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, ये वैल्यूज चाहिए। आई डोंट वांट टू सी INC XMS, ये कोड नहीं चाहिए, ये कोड मेरे काम का नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड अ पर्टिकुलर कॉलम हियर, एक कॉलम इंसर्ट करिए, ब्लैंक कॉलम, इसमें लिखिए क्लाइंट। ओके, देन देखिए बड़ा अच्छी चीज बता रहा हूं, आप अगर देख पाए उसको कर पा रहे हो तो मेरे साथ साथ आप यहां पर कंट्रोल H प्रेस करें, इसका नाम है फाइंड एंड रिप्लेस। तो आई वांट टू रिप्लेस, फाइंड व्हाट, फाइंड किया मैंने स्टार ब्रैकेट, स्टार ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस एंड बिटवीन दिस स्टार, यस, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस और उसके अंदर है स्टार। रिप्लेस विद नथिंग, मैंने कुछ नहीं लिखा है रिप्लेस में, ठीक है। तो देखेंगे क्या लिखा है, रिप्लेस फाइंड व्हाट ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर स्टार, रिप्लेस विद नथिंग एंड क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल, ठीक है। तो जैसे मैंने रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया, देखिए रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया, तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसको हटा दो। रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया तो उसने जहां जहां भी वो ब्रैकेट्स के अंदर कोड लिखे थे वो सब हटा दिए। दिख रहा है आपको? इट इज विजिबल? यस सर, विजिबल। हाँ, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो कोड है वो सब हट गए, तो डेटा थोड़ा और अच्छा दिखने लगा है, क्लियर होने लगा है। और भी चाहे तो उसमें और भी चीजें की जा सकती हैं, फिलहाल मैं वही बता रहा हूँ जो बहुत ज्यादा जरूरत है। नाउ द नेक्स्ट थर्ड कॉलम इज कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट में जो वैल्यूज है, लाइक बिल स्मिथ, जिसका आई बड़ा है, टी बड़ा है, एम छोटा है, केन सिंह, KEN बड़ा है, हर्ले फ्रिट्स, हर्ले और फ्रिट्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है। तो ये कुछ अजीब से नाम आ रहे हैं, इनको हम ठीक कर सकते हैं क्या, जो थोड़ा ठीक सा लगे कि अच्छी सी लिस्ट बनाई है। यस, वी कैन डू दिस। तो उसके लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी फर्स्ट इंसर्ट ए पर्टिकुलर कॉलम हियर, नया कॉलम इंसर्ट करें, कॉन्टेक्ट लिखें और इसके नीचे यहाँ पर लिख दें इक्वल्स टू। व्हेनेवर, एक बात ध्यान रखें, कभी भी आपको अगर एक्सेल शीट में डेटा से स्पेसेस हटाने हैं, आगे पीछे बीच में कहीं स्पेसेस हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस आ गए हैं,
गलती से हो गए होंगे प्रेस। तो यू वांट टू ट्रिम दोस स्पेसेस, तो उसके लिए ऑप्शन है इक्वल्स टू ट्रिम। एक टेक्स्ट कैटेगरी का फंक्शन है ट्रिम, TRI, ट्रिम, और टेक्स्ट का एड्रेस पास कर दो, क्लोज कर दो। ये ट्रिम क्या करेगा, उसके आगे पीछे फालतू के जो स्पेस है उसको हटा देगा, ट्रिमिंग कर देगा। जैसे आपने सुना होगा ना वर्ड ट्रिमिंग इंग्लिश में, इट इज सिमिलर टू दैट पर्टिकुलर वर्ड ट्रिम। तो इसने सबको ट्रिम कर दिया, तो स्पेसेस तो हट गए। आप देख सकते हैं, यू कैन सी देयर स्पेसेस आर नॉट देयर, बट स्टिल कैपिटल स्मॉल का चक्कर अभी भी है, कुछ कैपिटल है कुछ स्मॉल है। उसको क्या किया जाए? यस, उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, उसका नाम है टेक्स्ट कैटेगरी का एक फंक्शन है, उसको कहते हैं प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर। प्रॉपर क्या करता है? प्रॉपर करता है कि फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड मस्ट बी कैपिटल एंड आफ्टर दैट देयर मस्ट बी सम स्मॉलर लेटर्स, तो उसको ट्रिम कर देगा। और मैंने इसको ये ट्रिम किया, और ट्रिम करने के बाद इसको अप्लाई किया सभी जगह पर। नाउ यू कैन सी, दिख रहा है, कुछ अच्छा सा लग रहा है। यस सर। अगर हमने ये नहीं किया होता ना, तो SQL में या किसी और शीट्स में जब हम काम कर रहे होते हैं तो वो डेटा सर्च नहीं कर पाता है। ठीक है, वो बिल को तो सर्च कर लेगा, स्मिथ को कुछ और ही समझेगा। ठीक है, तो दैट इज वाई वी शुड, और वैसे भी प्रेजेंटेशन के टाइम पर भी डेटा मस्ट बी एक या तो कैपिटल ही हो या स्मॉल हो या प्रॉपर हो, इसी तरह से तो लिखा हो। ओके, अब मुझे एक डिलीट करना है क्योंकि दो हो गए हैं ये कॉन्टेक्ट। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी ये देखो, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कोई बताएगा? क्योंकि सर वो कॉलम उस कॉलम से कनेक्टेड है, उसमें फॉर्मूला लगाया था हमने। हाँ, एनीबडी एल्स? हाँ, बिल्कुल सही बात, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगा रखा है। ये जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑन इन कॉलम E इज रेफरेंसिंग टू द कॉलम D। अब जब D नहीं होगा तो उसका रेफरेंस कहाँ से मिलेगा उसको? तो इसका ऑप्शन है कि इन सब वैल्यूज को सर्च करें, सेलेक्ट करें, Ctrl+C करें यानी कॉपी करें, और इसी जगह पर पेस्ट नहीं करना है, पेस्ट स्पेशल करना है। पेस्ट स्पेशल और वैल्यूज, कॉपी, पेस्ट, स्पेशल, वैल्यूज, ओके। ठीक है, अब मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? सर एक बार और बता देना। ओके, दीपांशु, यस, ठीक है। यस सर। हाँ, पहले मैंने इस टेक्स्ट को यहाँ पर देखें सेलेक्ट किया था। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी किया, Ctrl+C किया, Ctrl+C के बाद राइट क्लिक किया फर्स्ट सेल में या कहीं भी। राइट क्लिक करने पर आएगा पेस्ट स्पेशल। तो बहुत सारे पेस्ट स्पेशल हैं। पेस्ट स्पेशल में एक है वैल्यूज। मुझे फॉर्मूला पेस्ट नहीं करना है, उसके अंदर की वैल्यूज को पेस्ट करना है। तो क्लिक हियर एंड वैल्यूज एंड क्लिक ओके। ओके करने के बाद ये वैल्यूज, ये सिंपल वैल्यूज हो गए, फॉर्मूले के साथ नहीं है। और उस एंड आई विल डिलीट द प्रीवियस कॉन्टेक्ट। अब मेरे पास सही वाला कॉन्टेक्ट बचा। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में आप देख पा रहे हैं क्लाउड टेक लिखा है और अंडरस्कोर टेक्सास लिखा है, स्ट्रैटेजी लिखा है, न्यूयॉर्क लिखा है। तो क्या लग रहा है देख के? फर्स्ट करेक्टर बिफोर अंडरस्कोर इज डिपार्टमेंट एंड द सेकेंड वर्ड आफ्टर अंडरस्कोर इज सिटी। तो डिपार्टमेंट और सिटी दोनों मिक्स हो रखे हैं एक ही कॉलम में, तो सर्चिंग में प्रॉब्लम आएगी। एक अच्छे डेटाबेस को अलग अलग होना चाहिए, डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, सिटी अलग होना चाहिए। लेकिन मैं इसको टाइप तो करके अलग करूंगा नहीं। कोई और ऑप्शन है? यस है। तो आप सिलेक्ट करें, इंसर्ट करें, एक नया कॉलम इंसर्ट होगा, उसको यहाँ डिपार्टमेंट ही लिख दें जैसे यहाँ लिखा है। वो कैसे चेंज करना है जरा वो एक बार देखिए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक,
डेटा की फर्स्ट वैल्यू पर आना है। देन डेटा टैब में जाना है, एक ऑप्शन है यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम्स दिख रहा है, डेटा में टेक्स्ट टू कॉलम्स। हम क्या करने जा रहे हैं, इधर शीट में से डिपार्टमेंट और सिटी को अलग अलग करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट और सिटी को अलग अलग करना चाहते हैं, इसको मैं सिटी कर देता हूँ। ठीक है, क्लिक ऑन डेटा, टेक्स्ट टू कॉलम्स। टेक्स्ट टू कॉलम 3 स्टेप्स में होता है, सेलेक्ट कर लेते हैं पहले सारा। यस, डिपार्टमेंट, डेटा, टेक्स्ट टू कॉलम्स, 3 स्टेप में होगा। कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड, स्टेप 1 आउट ऑफ 3। आपको यहाँ कुछ नहीं करना, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर अदर की जगह पर यहाँ लगा देना अंडरस्कोर। ध्यान से देखेंगे हमारे जो वैल्यू सेपरेटेड है, किससे सेपरेटेड है, डेलिमीटर्स क्या है, टैब है, सेमीकोलन है, कॉमा है, स्पेस है, या कोई और है। तो मैंने कहा कोई और है भाई, और वो है अंडरस्कोर। तो आई स्पेसिफाइड हियर अदर एज अंडरस्कोर। नीचे डेटा का प्रीव्यू देख रहे हैं आप, दोनों चीज अलग अलग हो चुकी है। और मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और इसको फिनिश कर देता हूँ। तो आप क्या देख रहे हैं, डिपार्टमेंट और सिटी अलग अलग हो गया या नहीं हो गया? यस यस सर। तो जो डेटा एक साथ एक कॉलम, ये बहुत बड़ी इशू है, बहुत बड़ा इशू है कि जब हम डेटा किसी थर्ड सोर्स से लेते हैं तो ये बहुत बड़ा इशू है कि एक ही कॉलम में सब लोग सारी चीजें लिख देते हैं। तो उसको अलग अलग में करना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं एक्सेल में जिससे हम अलग अलग कर सकते हैं, तो वी कैन सेव टाइम। तो क्लाइंट ठीक हो गया, कॉन्टैक्ट ठीक हो गया, डिपार्टमेंट ठीक हो गया, सिटी ठीक हो गया। अगला है, देखते हैं पेमेंट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या है कि कुछ वैल्यूज ना डुप्लीकेट भी आ रखी है, ये भी बहुत बड़ा इशू है। आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, देखिए सेलेक्ट किया डेटा, होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, सेल रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज। तो आप देखो यहाँ पर कितने वैल्यूज डुप्लीकेट है। ओनर वाइज नाम 2 बार आ रहा है, स्टीवन माइकल 2 बार आ रहा है, डेविड भी 2 बार आ रहा है। तो ये तो रिपीट हो रहे हैं वैल्यूज। तो कोई मुझे ऐसा काम करना चाहिए कि ये मैं हटा सकूं, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, उसके लिए ऑप्शन है कंट्रोल ए करिए, टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट गो टू डेटा टैब। डेटा टैब में एक ऑप्शन है बहुत बढ़िया सा, और उसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव डुप्लीकेट्स। तो क्लिक ऑन रिमूव डुप्लीकेट्स, सभी चीज़ों को देखे, ओके किया। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव डुप्लीकेट कहाँ पर है देखते हैं, डेटा, रिमूव डुप्लीकेट्स, ओके। तो उसको वो कह रहे हैं ना 3 डुप्लीकेट वैल्यूज मिली, यानी आउट ऑफ 31 3 डुप्लीकेट्स, 28 रिमेन इंटैक्ट। तो वो 3 वैल्यूज डिलीट हो गई। देखिए ये लास्ट में 3 वैल्यूज हट गए। ठीक, तो ये भी एक काम हो गया कि डुप्लीकेट वैल्यू डिलीट हो गए। मैं क्लीनिंग पर हूँ, डेटा क्लीनिंग पर। नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू डील विद दीज पर्टिकुलर ब्लैंक स्पेसेस। पेमेंट तो किया है, लेकिन मोड इनमें से कोई नहीं है, ये हो सकता है कैश हो या कोई और ही मोड हो, वो ऑप्शन नहीं है। रेवेन्यू इसका कुछ मालूम नहीं है, ब्लैंक है, दैट इज वाई ये वैल्यू डिवाइड बाई 0 भी आ रही है। तो ऐसे इस जगह पर क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इस इन ब्लैंक स्पेसिस को, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को या तो हम पूरा डिलीट करें, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज लिख दें कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। हाउ वी कैन डू दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक कंट्रोल ए, देन होम पे गए, यहाँ एक ऑप्शन है फाइंड एंड सेलेक्ट। होम पर फाइंड एंड सेलेक्ट, फाइंड एंड सेलेक्ट में आ रहा है गो टू स्पेशल, गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल में ब्लैंक्स आ रहा है एक, ठीक है, ब्लैंक्स। गो टू स्पेशल में आ रहा है ब्लैंक्स, और इसको कर देंगे हम ओके। क्लिक करते ही आप देखिए क्या होगा, जितने ब्लैंक स्पेसेस हैं वो सब सेलेक्ट हो गए, चाहे वो पेमेंट में है, रेवेन्यू में है, या कहीं और। ऑल दीज ब्लैंक स्पेसेस आर नाउ बिकम सेलेक्टेड। अब इन सभी सेल को, सभी ब्लैंक सेल्स को एक साथ एड्रेस करना है। तो व्हाट वी डू, गो टू फॉर्मूला बार, यहाँ पर लिखेंगे NA,
नॉट अवेलेबल। एंटर नहीं करना है, ध्यान से NA लिखिए। NA करने के बाद प्रेस कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर। जैसे आप कंट्रोल एंटर करते हैं, all these selected blank spaces now become filled with two characters, that is NA. Is this clear? एक ही साथ सर जहाँ से वैल्यू फिल की थी वहां से एक बार बता दो, मतलब जहाँ से NA करा था। सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई किया, ये यहाँ तक हो गया हिमांशु? हाँ सर, यहाँ तक हो गया। सीधा फॉर्मूला बार पर जाइए, फॉर्मूला बार में NA लिख दीजिए, एंटर नहीं करना है, सिर्फ NA लिख दीजिए और उसके बाद कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर। अब क्लियर है? हिमांशु क्लियर है? क्लियर है सर अब? ओके। अब इसमें एक चीज और रह गई है, बाकी शीट बहुत बढ़िया बन गई है, और वो है विद इन दिस प्रॉफिट मार्जिन कॉलम। प्रॉफिट मार्जिन कॉलम में 2-3 जगह पर वैल्यू आ रहा है, कैश वैल्यू। ये क्यों आ रहा है, कब आता है? आप जरा इस चीज को ध्यान से देखिए और कट फॉर्मूला देखिए क्या लग रहा है इसमें, I6 डिवाइडेड बाई H6, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट डिवाइड बाई रेवेन्यू। इस तरह से एक फॉर्मूला लगा हुआ है। क्योंकि रेवेन्यू में कोई वैल्यू नहीं है, NA लिखा है, तो एक नंबर को अल्फाबेट से कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो एक्सेल अपने हाथ खड़े कर देता है और यहाँ पर एक एरर दे देता है, दैट इज हैश वैल्यू। हैश वैल्यू इज एक्चुअली एरर, ठीक है। तो एक्सेल को नहीं समझ में आ रहा वहाँ क्या करना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू डिवाइड अ नंबर बाय अल्फाबेट, तो उसको टैकल करना है, उसको कैप्शन को कैच करना है। तो उसके लिए क्या करना है, गो टू फर्स्ट सेल, फॉर्मूला थोड़ा ठीक करेंगे। फॉर्मूले में लिखा है I3 डिवाइड बाई H3, इसकी जगह पर यहाँ पर एक हम चीज लिख देते हैं, इफ एरर इज देयर, अगर एरर है तो लिखा है वैल्यू और कॉमा वैल्यू इफ एरर। तो वैल्यू इफ एरर फाउंड हो तो लिख दीजिए इफ एरर I3 डिवाइड बाई H3 कॉमा NA, और इसको ड्रैग कर दीजिए, ठीक है, बढ़िया से ड्रैग हो गया और अब NA भी आ गया, ठीक। अब बस आप क्या करें, इस शीट को सेलेक्ट A करें, सॉरी कंट्रोल A करें टू सेलेक्ट द एंटायर टेबल एंड कंट्रोल T कर दें, तो उसकी टेबल बन जाएगी। और उस टेबल के किसी डिजाइन को देख ले जरा, अच्छा सा कोई डिजाइन हो तो। अदरवाइज ये शीट आपकी तैयार हो चुकी है। जी बताएं। कर पाएंगे? यस सर। देखिए वो शीट जो ऐसे दिख रही थी शुरू में, कितनी गंदे तरीके से दिख रही थी, वैल्यूज का आता पता नहीं, सेल के विड्थ इधर उधर गायब हैं, एरर्स दिख रहे हैं, कैपिटल स्मॉल का फर्क नहीं है, ठीक है, कॉन्टेक्ट नेम मैच हो रखे हैं, डिपार्टमेंट्स के साथ क्लब हो रखे हैं। तो इस एक पर्टिकुलर शीट को हमने कितनी अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया, वो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड डेटा क्लीनिंग। डेटा का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो हमें टास्क करना है, जो एनालिसिस करनी है, वो हम नहीं कर पाए। वापस चलें जहाँ पर थे हम, एक्सेल बेसिक्स हो गया, एंटरिंग डेटा विद रूल्स, डेटा क्लीनिंग हो गया। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स डेटा एनालिसिस। एनालिसिस कैसे करना है? एनालिसिस करने के लिए देखिए क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास।
वापस चलते हैं इधर, क्लोज दिस शीट। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? पार्टिसिपेंट्स, एनी क्वेरीज? ओके, तो आई एज्यूम नो क्वेरी। ओके, थैंक यू। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, चलिए, और वापस जाता हूँ उसी शीट पर, और फोर्थ शीट लेके आते हैं, एक्सेल वीलुकअप। वीलुकअप तो हो गया, चलिए, टाइम कभी निकल जाए। पहले फिफ्थ लेते हैं, पिवोट टेबल। पिवोट टेबल, टेक शीट 5, पिवोट टेबल। Okay, so this is sample sheet 5. There are numerous informations are available: ID number, date, product, region, size, method, and so on. तो इसमें हमें pivot table apply करना है to find some meaningful information. Pivot table होता क्या है? Pivot table is a method to filter your data. Pivot table is a method where you apply your queries and you point exactly those data which is required as you do it in filter. फिल्टर बहुत पुराना मेथड है, बहुत क्लासिकल सा मेथड है, लेकिन उसका नया वर्जन है पिवोट टेबल। पिवोट टेबल वही काम करता है जो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उसको देने के लिए कहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबने शीट खोल लिया होगा, आई थिंक, शीट 5 पिवोट टेबल। कंट्रोल ए किया मैंने, एंटायर शीट को सिलेक्ट किया, देन कंट्रोल टी, मेक सम टेबल आउट ऑफ इट, एंड ओके, माई टेबल हैज हेडर्स, यस। तो ये शीट टेबल की फॉर्म में आ गया। ओके, इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इसका नाम है पिवोट टेबल, तो टेबल बनना जरूरी है। सेकंड ऑप्शन क्या है? क्लिक ऑन इंसर्ट। मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप मेरे साथ चल सकते हैं। क्लिक ऑन होम इंसर्ट में, इंसर्ट, क्लिक ऑन इंसर्ट, पिवोट टेबल, मेरा माउस देखेंगे, पिवोट टेबल। पिवोट टेबल पे क्लिक करने के बाद आता है क्रिएट पिवोट टेबल। Select the table, yes, table is already selected, and choose where you want to pivot table report to be placed. Choose where you want the pivot table report to be placed. तो मैंने कहा न्यू वर्कबुक, आप एग्जिस्टिंग में भी कर सकते हैं, न्यू वर्कबुक। तो जैसे ही मैं न्यू वर्कबुक पे क्लिक करूंगा, देयर शीट, देयर एडिशनल न्यू शीट इज टू बी क्रिएटेड एडजेसेंट टू डेटा स्टेप। तो ये देखिए शीट बना, ये टेबल, पिवोट टेबल का एक लेआउट तैयार हो गया। जितने भी हमारे फील्ड थे डेटा में, आईडी नंबर, डेट, प्रोडक्ट, रीजन, वो आपको यहाँ सब दिख रहे होंगे। ये देखिए आईडी नंबर, डेट, प्रोडक्ट, रीजन से लेकर एक्सपेंसेस तक, ठीक है। उसके नीचे क्या लिखा है? ट्रैक फील्ड्स बिटवीन एरियाज गिवन बिलो। फिल्टर, 4 बॉक्सेस हैं, फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यूज। तो जब भी आप पिवोट टेबल यूज करते हैं तो these 4 blank boxes must be there, और इनका नाम होता है फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यूज। यहाँ पर हम फील्ड्स को ड्रैग करके लेके आएंगे, उठा के। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा काम करते हैं, पहले देखते हैं रेवेन्यू है ना यहाँ पर, यस रेवेन्यू है। रेवेन्यू को लेके आते हैं हम वैल्यूज, रेवेन्यू को लेके आए वैल्यूज, यस। तो देखिए कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ आउट ऑफ, पहले एक बार शीट समझ लेते हैं क्या। आईडी नंबर है, डेट है, प्रोडक्ट है, रीजन है। कौन सा प्रोडक्ट है? आईफोन है, मैकबुक है। रीजन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। सेल्स का मेथड क्या है? प्राइस पर यूनिट क्या है? कॉस्ट पर यूनिट कितना है? क्वांटिटी कितना सेल हुआ? रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? और एक्सपेंसेस क्या है? ठीक है, तो हमने यहाँ शीट से पूछा मेरा रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है टोटल, तो सम ऑफ रेवेन्यू आ गया दिस 36117848। लेकिन किससे कितना है ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, और अच्छे से बनाते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू जो आ रहा है किस प्रोडक्ट से आ रहा है, तो प्रोडक्ट है यहाँ पर एक ऑप्शन, प्रोडक्ट को लेके आते हैं हम ड्रैग करके रो में। देखिए कितना बड़ा शीट बन के तैयार हुआ है। रो, सम ऑफ रेवेन्यू,
एयरपॉड से कितना रेवेन्यू आया, आईपैड से कितना है, आईफोन से, आई वॉच से, मैकबुक से। हम चाहें तो इसको क्लिक करके, राइट क्लिक करके, सॉर्ट करके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं। दोबारा देखें, क्लिक करें किसी भी वैल्यू पर, राइट क्लिक करें, सॉर्ट करें और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करें। तो सबसे पहला जिससे रेवेन्यू आ रहा है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है मैकबुक से, वो ऊपर आ गया है, और सबसे कम वाला नीचे आ गया है। तो ये भी किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या किया है, टेक सम ऑफ रेवेन्यू और टेक रेवेन्यू इनटू वैल्यूज एंड टेक प्रोडक्ट ड्रैग्ड इनटू रोज। चलिए और अच्छे से इंफॉर्मेशन अगर देखनी हो तो एक काम करते हैं, रीजन भी देख लेते हैं कि भाई रेवेन्यू तो आ रहा है किस प्रोडक्ट से आ रहा है, लेकिन किस रीजन से भी आ रहा है, इसको भी डालने की कोशिश करते हैं। तो टेक रीजन एंड ड्रैग रीजन इनटू कॉलम्स। जैसे ही आप रीजन को कॉलम में लेके आते हैं तो आपकी शीट और अच्छे से एलेबोरेटेड हो जाती है। प्रोडक्ट का नाम है, टोटल है, ग्रैंड से टोटल है रेवेन्यू का, लेकिन किस रीजन से आ रहा है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, EMEA, APAC, किसी भी रीजन से जो आ रहा है वो यहाँ पर आपको दिखने लगता है। क्लियर? चलिए तो इसको हम वापस वहीं डाल देते हैं रीजन को। अच्छा, अभी देखिए मैं आपको एक दो चीजें और दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक बात और, whenever you are here in pivot table और आप किसी भी वैल्यू पे डबल क्लिक करते हैं, जैसे कि मैंने क्लिक किया आईपैड पे, आईपैड की जो वैल्यू है ये वाली, आईपैड की जो वैल्यू है, इस पर डबल क्लिक करते हैं, देखते हैं डबल क्लिक से क्या होता है। हिट डबल क्लिक, एक नई शीट खुल जाती है जिसमें सारे आईपैड दिखते हैं, किस कस्टमर ने लिए हैं, कहाँ लिए हैं, कितना एक्सपेंस हुआ है, पूरी डिटेल्ड शीट। ठीक है, आई वॉच पे क्लिक करेंगे तो आई वॉच की दिख जाएगी, एयरपोर्ट पे क्लिक करेंगे एयरपोर्ट की दिख जाएगी। ठीक है, तो पिवोट टेबल की एक खास बात है, ये वैल्यू जिस भी पर्टिकुलर सेल्स से आई है उसके बैकग्राउंड शीट क्या है, उसकी बैकग्राउंड शीट की डिटेल्ड शीट रिपोर्ट की फॉर्म में आपको मिल जाती है एज एन एडिशनल शीट। बहुत बढ़िया फीचर है ये, जो कि फिल्टर में नहीं होता। ओके, लेट अस सी फ्यू मोर थिंग्स। राइट क्लिक हियर, शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, क्लिक कर दें। बहुत बढ़िया, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या लग रहा है? 29% रेवेन्यू कहां से आ रहा है, मैकबुक से। 9% द लीस्ट वन कहां से आ रहा है, आई वॉच, आउट ऑफ द टोटल ग्रैंड टोटल दैट इज 100। तो ये इंफॉर्मेशन भी एक अच्छे से मिल जाती है, तैयार हो जाती है। अच्छा, अगर मैं इसमें यहाँ पर काम करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं और समराइज वैल्यू करते हैं, एवरेज कर लेते हैं, ये हटा लेते हैं। यस, एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, यस, प्राइस पर यूनिट, एक ऑप्शन था यहाँ प्राइस पर यूनिट, मैंने रिप्लेस किया, प्राइस पर यूनिट को वैल्यूज में लेके आए। हर एक यूनिट का एवरेज प्राइस क्या है, तो एवरेज प्राइस देखेंगे सबसे ज्यादा मैकबुक का, एक यूनिट का प्राइस कितना है, एवरेज प्राइस। तो वी कैन डू ए नंबर ऑफ थिंग्स इन दिस पिवोट टेबल। ठीक है, कर पा रहे हैं आप मेरे साथ? वापस करते हैं एंड देन वापस ले आते हैं रेवेन्यू। ओके, अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं यहां पर, और वो है स्लाइसर।
क्या है पिवट टेबल में स्लाइसर। स्लाइसर एक्चुअली एक फिल्टर मेथड है, पिवट टेबल के साथ ही यूज होता है। तो जब आप पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, एनालाइज में आएंगे, तो यहाँ आता है इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर, तो स्लाइसर को लेके आता है, क्लिक स्लाइसर। किस पे स्लाइस करना है? रीजन पे स्लाइस करना है। चलिए ओके, एक स्लाइसर आ गया। ये आपको जो प्रोडक्ट का नाम और रेवेन्यू दिख रहा है वो टोटल दिख रहा है कि एयरपॉड की टोटल सेल कितनी हुई है, आईपैड की टोटल सेल कितनी हुई है आउट ऑफ ऑल रीजन्स। मैं कहता हूं मुझे सिर्फ नॉर्थ अमेरिका की चाहिए, तो क्लिक नॉर्थ अमेरिका। तो यू विल फाइंड द टोटल रेवेन्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन। मेरे को साउथ का चाहिए, साउथ पे क्लिक कर देंगे। एपीएससी का चाहिए, यूरोप का चाहिए, यूरोप का ले लेंगे। कोई भी नहीं चाहिए तो सबको ही हटा देंगे। मल्टीपल स्टिक्स कहेंगे, 2 के चाहिए मेरे को, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, मल्टीपल कर देते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ 2 रीजन का भी आ जाएगा। स्लाइसर और भी बढ़ा सकते हैं, और आपको स्लाइसर चाहिए तो स्लाइसर और भी बढ़ाए जा सकते हैं। एनालाइज स्लाइसर, क्वांटिटी का स्लाइसर भी लगा सकते हैं, 2 स्लाइसर हो जाएंगे। तो यू कैन ऐड मल्टीपल स्लाइसर के रीजन में, वो जहां पर इतनी क्वांटिटी सेल हुई हो वो भी मिल जाएगा। तो दिस स्लाइसर इज एक्चुअली इम्पोजिंग फिल्ट्रेशन कंडीशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पिवट टेबल। बात समझ में आ रही है? ठीक बताएं। यस सर। चलिए, तो स्लाइसर समझ में आ रहा है, स्लाइसर आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वन मोर थिंग, एक इसमें ऑप्शन है रीजन। देखिए यहां पर आता है, ऑप्शन है पिवट टेबल में, एनालाइज में पिवट चार्ट। जब आप टेबल पे क्लिक करेंगे, एनालाइज में पिवट चार्ट, पिवट चार्ट आपको एक चार्ट देगा यहाँ पर, जैसे कि ये देखिए चार्ट, ठीक है ना। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, पिवट टेबल, पिवट चार्ट सुने ना, तो पिवट चार्ट एक टेबल से बना हुआ चार्ट है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट के हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इट इज फॉर ऑल, वी कैन चेक ओनली 1 प्रोडक्ट, ओनली फॉर 2 प्रोडक्ट। तो दिस इज द टेबल कस्टमाइजली मेड विद दिस पर्टिकुलर पिवट टेबल। अब जैसे हम टेबल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये चार्ट लेके आते हैं, तो ये जो 4 हमारे ऑप्शंस थे, फिल्टर, रो, कॉलम और वैल्यूज, ये चेंज हो जाते हैं, आपने देखा होगा। चार्ट के बनते ही these 4 column, these 4 boxes, these 4 chambers now become renamed as filter, legends and axis। तो मैं legends में लेके आता हूँ region, टेक रीजन एज legend। तो देखिए प्रोडक्ट भी दिखाएगा लेकिन रीजन वाइज भी दिखाएगा। हाउ डायनेमिकली दिस चार्ट इज बीइंग चेंज्ड, ठीक है। तो पिवट टेबल के साथ पिवट चार्ट भी बनाया जा सकता है, और वो कहाँ होता है? आई एम रिपीटिंग इट अगेन, एक बार फिर आपको बता देता हूँ। क्लिक करेंगे वैल्यू पर, एनालाइज में जाएंगे और यहाँ आएगा पिवट चार्ट। कैसा भी पिवट चार्ट आप बनाएं तो कोई इशू नहीं है, अगर वो अवेलेबल होगा तो जरूर बना दें, ठीक है। तो दिस इज पिवट चार्ट अलॉन्ग विद पिवट टेबल। कोई नया प्रोडक्ट, अच्छा एक चीज आपको और दिखाता हूँ,
डेटा में आए, यहाँ पर सबसे लास्ट में एक प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ। सारी चीजें वही हैं, कॉपी कर लिया। प्रोडक्ट का नाम एयरपॉड की जगह मैंने कर दिया माउस। आई एम एडिंग वन न्यू प्रोडक्ट हेयर एज माउस, बाकी चीजें सब सेम है। और मैं शीट 1 पे आता हूँ, लेकिन माउस अभी यहाँ दिख नहीं रहा। एयरपॉड दिख रहा है, आईपैड दिख रहा है, ये दिख रहा है, माउस दिख नहीं रहा है ना, जबकि हम यहाँ ऐड कर चुके हैं। सो इसके लिए क्या करना है, वापस वहीं आना है एनालाइज पर, और यहाँ एक ऑप्शन है रिफ्रेश। जैसे ही मैं रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा, मैकबुक के नीचे एक प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा जो मैंने अभी ऐड किया है, दैट इज माउस। देखिए, ठीक है। तो डायनेमिकली इट विल चेंज। नया प्रोडक्ट ऐड हुआ, नया रीजन ऐड हुआ, वो सब पिवट टेबल में चला जाएगा। बट द थिंग इज यू नीड टू क्लिक ऑन रिफ्रेश बटन। So this is how pivot table and pivot chart being incorporated and find some relevant values after filtration and after applying some valid rules out of it. Okay. तो किसी टेबल से कितनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, कितनी स्पेसिफिक, कितनी फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो ऑप्शन इज पिवट टेबल एंड द विजुअलाइज फॉर्म इज पिवट चार्ट। आई थिंक दिस इज क्लियर। Now we are moving towards next sheet. Time धीरे धीरे पास हो रहा है, धीरे धीरे आगे जा रहा है। नेक्स्ट शीट इज व्हाट इफ एनालिसिस। देख लेते हैं एक बार जल्दी से। गोल सीक, बहुत जल्दी करूंगा मैं आपकी बात, थोड़ा सा कुछ टाइम कम है। गोल सीक, शीट नंबर 6, गोल सीक। बहुत बेसिक सा एक ये है, देखिए क्या है। There are 5 subjects and the marks in these 5 subjects are given here, and total 245, average 48.8. एक सब्जेक्ट है सब्जेक्ट 5 that is missing here, the marks of subject 5 is missing here, इसका एग्जाम अभी नहीं हुआ है। तो ये पर्टिकुलर स्टूडेंट XYZ जानना चाहता है कि मुझे अपना स्कोर, आगे लिखा है टास्क, इफ वी वांट टू अचीव an average of 55, what should be the marks in subject 5? 55 का एवरेज जो कि अभी 48.8 है। If I want to achieve an average of 55, then how much marks should I score in subject 5? तो ये गोल सीक की एक परफेक्ट कंडीशन है। गोल सीक जैसे कि नाम से लगता है, गोल सीक। My goal is to achieve 55 average and how I can seek it. तो इसका एक ऑप्शन है, go to data tab, click on what if analysis, और यहाँ पर ऑप्शन है गोल सीक। एक ऑप्शन है गोल सीक, क्लिक करेंगे गोल सीक पे। बहुत सिंपल सा ऑप्शन है। It requires only 3 values from you, set cell, to value and by changing cells. सेट सेल क्या रख रहे हैं हम, मेरा टारगेट क्या है, एवरेज को 55 करना है। एवरेज को सिलेक्ट कर लीजिए, दैट इज C10। कितना टारगेट करना है, 55। सेट सेल C10 टू व्हाट वैल्यू, 55 बाय चेंजिंग सेल। चेंजिंग सेल क्या है, सब्जेक्ट 5। तो एक्सेल का जो प्रोसेसर है वो इस सेल पर, सब्जेक्ट 5 पर अलग अलग वैल्यूज रखता रहेगा और उस जगह पर रुकेगा जहां पर एवरेज 55 को टच कर देगा। ठीक है, बड़े ध्यान से स्क्रीन को देखिएगा, आपको ये चीज होते हुए दिखेगी। यस, सो it is suggested that this particular student XYZ should score 31 marks to achieve a average of 55. Click OK. तो ये है गोल सीक, जिसमें कि आपको सिर्फ 3 वैल्यूज चाहिए होती हैं। कौन कौन से वैल्यूज बताए मैंने आपको, सेट सेल, टू वैल्यू एंड बाय चेंजिंग सेल। ठीक है,
ध्यान रखेंगे सेट सेल जो होगा ये हमेशा ऐसा वैल्यू हो जिसमें फॉर्मूला लगा, इंडिपेंडेंट नहीं। सेट सेल जो वैल्यू आप दे रहे हैं, सेट सेल का C10 जो आप दे रहे हैं, इट मस्ट बी कंटेन सम फॉर्मूला, अदरवाइज इट विल नॉट बी कैलकुलेटेड। क्लियर? तो मैं गोल शीट को क्लोज करता हूं, आगे चलते हैं। फिर एक हम ले जाते हैं डेटा विजुअलाइजेशन में भी, डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन ओके, डेटा विजुअलाइजेशन एक वर्ड आ रहा है विजुअलाइजेशन। इफ यू सेलेक्ट द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ विजुअलाइजेशन, इट मीन्स द थिंग विच इज विजुअल्स टू यू। डेटा को पढ़ना पड़ता है, पढ़ के समझना पड़ता है, लेकिन टेक्स्ट से बना हुआ विजुअल चार्ट या ग्राफ आपको अपनी कहानी खुद कह रहा होता है। याद करिए मैंने एक वर्ड बोला था, डेटा स्टोरी टेलिंग। डेटा ऐसा हो जो अपनी कहानी खुद बता रहा हो। तो वो समझने के लिए सी दिस पर्टिकुलर शीट, देयर आर फिगर्स, एम्प्लॉयज, ऑफिस स्पेस, बजट एंड एक्चुअल, दीज आर एक्सपेंसेस। वैल्यूज समझने पड़ रहे हैं, पढ़ने पड़ रहे हैं, उससे कुछ मीनिंग सा निकल रहा है, ये अभी समझ में नहीं आ रहा बहुत जल्दी। लेकिन इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट इनटू सम इमेज, सम पिक्चर्स, सम विजुअल पिक्चर्स, so that would be easily understandable and easily you can say apply, easily need to apply somewhere. So first of all, इसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, select this range, go to insert, click on, there are charts available, बहुत सारे charts हैं, देखिए कितने हैं, all charts, column, line, path, pie, bar, area, x-ray, scatter, stock, surface, radar, tree maps and bus. There are a number of charts available. हम एक चार्ट लेते हैं, column chart, and this is chart. Yes, ये वो चार्ट है जो अपने आप ही आपको एक्सपेंसेस के बारे में बता रहा है. I can complete this expenses. This is a very basic chart, raw chart. You can add certain elements, charts elements here. उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है. यहाँ पर एक है add chart elements. डिजाइन के अंदर add chart element. आपको एक्सिस सेट करना है, एक्सिस के टाइटल लिखने हैं, चार्ट का टाइटल, डेटा के लेबल्स, डेटा टेबल, एरर्स, ग्रिड लाइन, लेजेंड्स, ट्रेंड लाइन, वो सब आपको एड चार्ट एलिमेंट में दिख सकता है. ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, चार्ट के एक्सिस क्या है, टाइटल क्या है, वो सब मॉडिफाई किए जा सकते हैं. ठीक है. दूसरा है एक शीट है फॉरकास्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा जरा. ये डेटा कहीं से मुझे मिला, डेटा अबाउट ऑफ सर्टेन एनएवी ऑफ सर्टेन म्यूचुअल फंड, डेट और एनएवी लिखा है. 2018 से लेकर 2023 तक का डेटा है, यानी 5 इयर्स का डेटा है, हर महीने का डेटा है. मैं इसका प्रोजेक्शन देखना चाहता हूँ, फॉरकास्ट देखना चाहता हूँ क्या है. ठीक है, फॉरकास्ट. सेलेक्ट द रेंज, सेलेक्ट द डेटा रेंज. अब इसका जो ग्राफ है वो इंसर्ट में नहीं मिलता है, डेटा में मिलता है. डेटा में फॉरकास्ट शीट, फॉरकास्ट शीट पे क्लिक करेंगे, देखिए दिख रहा है आपको सबको फॉरकास्ट शीट. फॉरकास्ट शीट में काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, एनएवी है, फॉरकास्ट है. फॉरकास्ट एंड कहाँ हो रहा है, 26 नवंबर 2024. अभी चल रहा है 23, यानी कि अगले एक साल का भी इन्होंने फॉरकास्ट करके दिया हुआ है. ऑप्शंस में देखते हैं, ये सारी चीज़ें बता रहा है कि मेरे को कहाँ से कहाँ तक इन्होंने कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना लिया है, मिसिंग वैल्यूज को कैसे ट्रीट कर रहा है. ठीक, और यहाँ कर दिया क्रिएट. यस, क्रिएट करते ही ये चार्ट ऐड हुआ और ये चार्ट आपको बड़ा अच्छे से दिख रहा है, इसमें ये ट्रेंड दिखा रहा है, फॉरकास्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है. पहली वैल्यू कहाँ से चली थी, कहाँ तक पहुँची, ये हमारी करंट वैल्यू है, करंट यानी कि जुलाई का यानी अगस्त का वैल्यू है. उसके आगे 3 प्रोजेक्शंस निकाल रहा है.
तीन फोरकास्ट कर रहा है, गुड, बैड और वर्स्ट और एवरेज। बीच वाली लाइन डॉटेड है, बोल्ड है, जो कि मोस्ट लाइकली वाली सिचुएशन है। ऊपर वाली लाइन एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन हो सकती है, और नीचे वाली लाइन भी एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन होगी। तीन पाथ पे जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये चार्ट देखा आपने। चार्ट देखने के बाद आप इस चार्ट को पे बनाने के बाद यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, कुछ वैल्यूज और ऐड हुए हैं यहाँ पर। टेबल के हेडिंग्स बदल गए हैं, कुछ वैल्यूज और ऐड हुए हैं जो कि यहाँ से ऐड हुए हैं। ये प्रोजेक्शन है अगले आने वाले फ्यूचर का। फोरकास्टिंग एनएवी कितनी जा सकती है, लोअर कॉन्फिडेंस पे कितनी जा सकती है और अपर पे कितनी जा सकती है। यानी कि 47 से 80 तक जा सकती है एनएवी, लेकिन जिसके ज्यादा चांसेस हैं वो 64 है। ठीक है, बहुत अच्छा चार्ट है फोरकास्ट। एक अलग से शीट तैयार करता है शीट 1 के नाम से, जहां पर ये शीट को एलैबोरेटेड फॉर्म में देता है। यानी ऐसी शीट को इस तरह से बना लेता है। कैंडल स्टिक भी है, सेलेक्ट करेंगे रेंज, इंसर्ट पे आएंगे, देयर आर सर्टेन चार्ट्स। इसमें एक स्टॉक चार्ट है, स्टॉक में ये वाला कैंडल चार्ट है। ओके करेंगे, रेंज को थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं। ये कैंडल चार्ट तैयार हो गया, जिसको आप स्टॉक प्लॉट कहते हैं। स्टॉक मार्केट वाले लोग इसको समझ पा रहे हैं। डोनट चार्ट है, ये अभी हमने बनाया हुआ है कई बार। तो ये इस तरह के कुछ चार्ट्स हैं जो अपनी कहानी खुद बयां कर रहे होते हैं। ठीक है, so this is how data visualization works. Now at the end of the program, I must say that understanding Excel is not a big task if you are familiar with this. Yes, any question, Anmol? Sir, what is the meaning of upper confidence and lower confidence? Okay, upper confidence, lower confidence means just yes. See, this is the flow of forecast values from 2018 to 23. The blue line. After this, there may be three projections. देखिए, तीन चीजें हो सकती हैं। या तो जैसा पास्ट परफॉर्मेंस चल रहा है वैसे ही चलता रहे, उसी को प्रोजेक्ट बनाकर वही फोरकास्ट आगे चलता रहे, तो बीच वाली लाइन बोल्ड है, दैट इज मोस्ट लाइकली। अगर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया तो ये ऐसे जाएगा। अगर ड्रास्टिकली कुछ अप जा सकता है तो वो अपर कॉन्फिडेंस है, और जो नीचे जा सकता है वो लोअर कॉन्फिडेंस। ये तीन वैल्यूज जो दिख रही हैं आपको, द अपर वन इज as optimistic or pessimistic, right? Exactly. Optimistic, pessimistic and most likely. ठीक है, तो तीन चीजें हो सकती हैं, बहुत ज्यादा भी जा सकता है अगर ट्रेंड के हिसाब से, लेकिन ऑल दीज डिपेंडिंग अपॉन ट्रेंड्स। तो कॉन्फिडेंस, हालांकि ये वर्ड स्टैटिस्टिक्स से आया है कि आप कितना % कॉन्फिडेंस उसमें ले रहे हैं, ये पूछता भी है हमसे यहाँ पर while मेकिंग इट, लेकिन इसके मतलब यही है कि तीन डायरेक्शन में जा सकता है, बट मोस्टली इट इज बीइंग द मिडिल वन, दैट इज बोल्ड। तो आज के सेशन में हमने देखा एक्सेल का बेसिक्स, डेटा को एंटर करते वक्त कौन कौन से रूल सेट करने चाहिए, डेटा को क्लीन कैसे करना चाहिए, एनालिसिस में वी लुकअप, हालांकि नए वर्जन में एक्स लुकअप भी आ गया है, पिवट टेबल, गोल सीक, ये सब हमने देखा। कुछ बीच बीच में फंक्शंस भी हमने यूज किए, जैसे कि प्रॉपर, जैसे कि ट्रिम, जैसे कि एलियन, कंट्रोल ए, बहुत सारे हमने यूज किए। और डेटा विजुअलाइजेशन, जैसे कि हमने चार्ट्स बनाने सीखे, फोरकास्ट सीखा। आफ्टर दैट वी अंडरस्टैंड डोनट चार्ट को हम नहीं करा पाए थे, इसके अलावा कैंडल स्टिक चार्ट, दैट इज स्टॉक प्लॉट, वो हमने सब सीखा। एंड टुवर्ड द एंड ऑफ द सेशन आई मस्ट से दैट देयर आर जी okay, just wait, I'm going to close it. There are certain shortcut keys. You must understand these shortcut keys, because if you familiar with these shortcut keys, you can
do your work very easily and very interestingly. You enjoy to do this. एक्सेल करते वक्त आपको अगर मजा आना शुरू हो गया ना, तो समझिए कि आपका आधा काम खत्म हो गया. तो काम और काम के साथ एंजॉय अगर आप कर पाएंगे तो आपका काम ही आधा हो जाएगा. Personally, when I do Excel, I feel very much, you can say, excited. अरे मजा आएगा एक्सेल करने में. कंट्रोल ए यूज करेंगे, बी भी है, सी भी है, सब पता है ये. जब तक ये ए से लेके जेड तक मेन आपको नहीं पता है ना, तो समझिए कि एक्सेल आपको यूज करना बहुत ही आसान है. एंड एक्सेल इज नो डाउट एक ऐसी चीज है जो कभी ऑब्सोलीट नहीं होने वाली है और हर एक चीज का बेस तैयार करती है. ठीक है. व्हेन यू क्रिएट, जैसे कि हम लोग अभी एमबीए कर रहे हैं, पहले उससे पहले ग्रेजुएशन किया, लेकिन 10th तक सभी लोगों ने कॉमन एजुकेशन. तो एक्सेल इज लाइक दैट कॉमन एजुकेशन. आपको वो कॉमन एजुकेशन अगर आगे को मिल गई, एक्सेल आपको चलाना आ गया, तो पावर बीआई हो, एक्सक्यूएल हो, तो आपकी समझ डेवलप होगी. ठीक है. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन पुट इट डाउन ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप or here also. I will definitely answer it. और हमें एक अच्छा सा डेटा को समझना, डेटा को बनाना, डेटा को एनालिसिस करना बता सकते. तो थैंक यू. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. Shaki? Thank you so much, sir, for making us understand about. Any question? Okay, please. Thank you, sir, for making us understand about basics of MS Excel, about data cleaning, data analysis, and visualization tools in a very simple and efficient way. The students will be utilizing all this in their companies, which would be beneficial for them. So the feedback link and the attendance link is provided in the chat box. Please fill up the form as it will be closed after 5 minutes.